चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। Era has changed. Right now we have 3 trousers for our kids who are going to school, 5 shirts. Many families देखा देखी को देख के कि उसका बेटा जो है वो MBBS करने गया, हमारा बेटा भी होता है. Pledge today that we'll be ensuring that we'll keep our eyes open. So you see, 14th November 1985. जेंडर को प्रॉब्लम नहीं करता है. इट्स लाइक इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन. इट क्रिएट्स अ वेरी इनह्यूमेन प्रॉब्लम. सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी फ्रॉम एवरी जेंडर. बहुत अच्छा इवेंट हमारे लिए क्रिएट किया. हम इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मोटिवेट हुए और ऐसे इवेंट अपनी इज्जत के साथ साथ आप लोग अपनी सोसाइटी की इज्जत, अपनी फैमिली की इज्जत को रिप्रेजेंट करते हो. सो वेन एवर यू आर आउट, यू आर वॉकिंग एट्सेट्रा, सो ट्राई टू बी कन्वीनियंट. रिलाई करते हैं ड्रग्स पे, कंप्लीट उसी चीज़ पे रह रहे हैं. इट्स नॉट एक्चुअली, वी शुड नॉट रिलाई ऑन दीज थिंग्स. हमें ऐसा होना चाहिए कि वी शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ड्रग्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर आवर किड्स और आवर चिल्ड्रन. हम एक दूसरे को देखा देखी है ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं. नहीं डाला डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना उसमें से नहीं मतलब। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ती वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ती वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखे से सागी। Assalamualaikum and very good morning everyone. Thank you Mr. Khan and Mr. Saik for the wonderful conduct of the program so far. And I would extend my thanks to Dean sir, who is on a mission, and I think to be fair enough that drug addiction in 2002 once I joined psychiatry. That time it was mental hospital that we used to conduct study. जैसे जियो का स्कीम था, पहले 1 साल से फ्री था, फिर पकड़ लिया आपको, right? I remember a boy, I'm talking seriously. The reason is that when youngsters, one is that you feel young, the day feels that you feel young with young people, and second is that they are the pillars of our nation. They are going to tomorrow build our nation, and if they are taught rightly, they are actually told how to proceed in their life, then only they can handle the issues. So the family came in December 21st. I remember the fateful day, and they literally came onto my feet telling me, Doctor sir, हमारा बच्चा यहाँ मान नहीं रहा आना क्लिनिक पे, तो उसका इलाज करिए. मैंने कहा क्या इश्यूज हैं? कोई बात नहीं, साइकियाट्री में कभी ऐसा होता है कि बच्चा या बच्ची कतराते हैं बिकॉज ऑफ स्टिग्मा दैट इज एसोसिएटेड विद साइकियाट्रिक इलनेसेस. नहीं डॉक्टर साहब, आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, लेकिन हम बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हम कह भी नहीं पाते हैं क्या हो रहा है. मैंने कहा क्या हो रहा है? They said you were not knowing for 2 years that our son is into drugs of addiction. Not one, not two, he is using multiple. Right?
I think you can discuss later on if you want to discuss something. We are talking something very serious. I'm telling you about a real hardcore story. Honestly telling you, for last 2 months, almost every day I remember that boy and that family. Believe me. Because the family was known to me. That is how you know that how a family, अगर आपकी family में किसी को accident हो जाएगा ना, and he becomes crippled in bed for last 2 years, 3 years, you understand what's the pain. किसी के और के घर में है तो आपको नहीं यार आज से 4 निकालना से मत हो. So the family came and said that we have 3 sons, 3 daughters. Well-off family, very good family. Business class family है, आधे educated है, लेकिन business में ज़्यादा है. One son is mentally retarded, the eldest one. Mild to moderate mental retardation, he is not able to earn his livelihood, right? Second son is this one. Third son who was killed in an accident just 2 years back. So they are left practically with one son only, and for whom they had come to, literally begging that please give our son back to us. I said, I'm not almighty, Nasbillah. I'm a simple doctor. I'll try to help you, whatever way I can. Somehow I told them that we'll give some medicines. You motivate him to come over at least once. I will see him, then he can go back. Somehow he came over, a lovely boy, 6'3" almost. I told him, why are you using this? He said that मैं ऐसे ही कहीं जा रहा था पेट पे, तो दोस्त लोग 1-2 ने यूज किया, बोला यार 2-3 दिन से हम पहलगाम में मस्ती कर लेते हैं, आप भी ले लो. तो इससे सारी परेशानियां, टेंशन वगैरह खत्म हो जाती हैं. So he started it as a pleasure, not really as something else. So this pleasure became a habit became an addiction. So I treated him, and after 1 month, neither the family reported nor the patient reported to me. In August, September this year, I'm outside my casualty, and a Maruti 800 came. 2 boys inside the Maruti 800 just pushed one of the guys out of the car, and he was on the floor. He was on the sadak pe. As he did it. So we really were stunned what happened. We thought this is something turmoil related with incident, something like that. Somebody came closer that, he is bleeding from his arm. Right? So probably he is frothing also. He is a drug addict, most likely. And Majid sir, aap aa jaiye, aap dekhiye. I was there only, I was around. I saw he was gasping. He was almost dead, his vitals were dilated, his pulse was nowhere, he was perspiring, he had incontinence of urine and feces. So we dragged him to, I was not knowing, I dragged him to casualty, and we started somehow ventilating him and trying to resuscitate him. But meanwhile he died. We had no idea who this boy is. Somehow somebody came and he said that he is from Falana locality. I will not name the locality. And he is son of Falana. I remember he is the same boy. I sat down in my chair and I just could not, I did not know how to now behave, because his father is my friend as well. So I don't know how to call him that your son is admitted and he is dead. So somehow I gathered the courage and just called him up. He said, डॉक्टर साहब आपने कैसे याद किया मुझे, आज कुछ चाहिए घर के लिए? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका बेटा बीमार है, वो मेरे पास आए हुए हैं, आप प्लीज़ आ जाइए. तो सब ठीक है ना? मैंने कहा आप सब ठीक है, मेरे पास आ गए हैं, तो आप आ जाइए एक बारी देखने के लिए. I would love you to come. He said, I'm in Pulwama, I'm not here in Srinagar. I said, you just come over, it's very important that I need to see you. Somehow he managed to come in 40-45 minutes, and he saw the dead body of the son, who was the only healthy person. So then it was Qayamat, जिसको कहते हैं, it was really. They said that डॉक्टर साहब हमने आपसे बहुत चीज़ें छुपाई थी,
our eldest daughter was getting married and we had gold around 30 lakh rupees which was bought for her. जब हमने लाकर देखा इनकी डेथ के बाद 10-15 दिन के बाद हमने देखा सोना तो सारा गायब है, सोना तो है ही नहीं, हुआ कि प्लान टू गेट हर मैरिड इन नवंबर, तो हमारे पास है नहीं कुछ, हम कहाँ से लाएंगे इतना 30-35 lakhs for a middle class average family is a huge amount. So somebody told them he has sold it to a jeweler and he just vanished. So the family is right now in a prolonged grief. Mother is coming to me for the treatment of depression. That is why whenever I see a family, I see an individual with drug addiction, it's not the individual only, it's the family which is getting involved. What about that mentally retarded brother? वो परेशान है, अब अगर हम मर गए, इस भाई को तो एक भाई था वो भी चला गया, उससे पहले एक भाई था वो. So this is the state of affairs. I don't want to frighten you, but this is the hardcore reality of our society. You need to understand, right? इन चीजों, this is just a prototype. You suddenly see these days कि फलाना की गाड़ी में डेथ हो गई लड़के की, उसकी बॉडी पाई गई, किसी की वहाँ ब्रिज के नीचे डेड बॉडी पाई गई. Most of the times, if not every time, I don't have diagnosis of everyone who dies in such circumstances, but I can tell with authority, the first diagnosis should go as an overdose of drugs. Correct? तो हमारा क्या फिर सिस्टम बनता है, जो अभी कौसर साहब ने भी बताया कि 10 से 12 लाख एडिक्शन रिलेटेड केसेस हैं हमारी सोसाइटी में. आप समझिए कि इस बच्चे को पालने पोसने में पहले ये माँ अपनी कोख में रखती है 9 महीने. How much pain she has during this period. She has to look after her family, look after herself, look after this child, go to a doctor almost regularly, and then delivery pains, labor pains, and then upbringing of this child. How much investment is there? It's not all about money. See, we are in a materialistic world. माजिद साहब अच्छे खासे घर के हैं, ठीक ठाक सैलरी है, तो इनसे दोस्ती करनी है. That's an unfortunate part of it. ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है, he gets into a company which is really at times bad for him, and this company spoils him. So it's always imperative for you people to identify people who are into this drugs of addiction, because अगर आपके क्लास में एक बंदा नशा कर रहा हो, see, cigarette is something which is socially acceptable, but let me tell you my story. It's a real story. I was a cigarette smoker during my MBBS days in medical college, and because of me, 2 guys became cigarette smokers. जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरी वाइफ ने कहा कि शादी तब होगी जब आप सिगरेट छोड़ेंगे. I left cigarettes 1 month before my marriage. It's almost now 20 years. But the guilt I have, the 2 guys who started smoking because of me are still continuing. That's the guilt inside me, honestly telling you, very honest. It's an honest confession. And that guilt will remain forever. Because I am spoiling their pocket. They spend around 200-300 rupees per day. I am spoiling their, I am partly responsible for spoiling their health also. I have told them many times, please भाई साहब मैं guilty feel कर रहा हूँ, आप ये छोड़ दो. आपने आदत की, आधे गुना आपको है, आधे हमें. Right? So this peer group pressure, what I mean, even if we were in medical college, but they got hooked to this tobacco after we met in medical college. So सबसे बड़ा important जो चीज़ है peer group pressure. जिस कंपनी में आप बैठोगे उसी में आप सीखोगे. आप शराब खाने में बैठोगे तो शराब पीना ही सीखोगे. अच्छी सोहबत में बैठोगे अच्छी चीज़ सीखोगे. So try to identify people who are
not keeping good company. Always we see that there are we can identify these people who are actually using these drugs of addiction. Try to identify those people. It may be your neighbor, it may be your family member, right? सबसे बड़ी बिहेवियर की चेंज आती है इन बंदों में. अगर हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे, मैं फिगर्स की बात नहीं करूँगा. I have given you an example, and unfortunately, if we go as per the current trends, we have addiction treatment facility in SKIMS Pamina. It is just established 1.5 years back only, and already we have 2,000 opioid users who have been registered. 2001 साल में ही आ गए ट्रीटमेंट के लिए. And this is thought to be one of the disorders जहाँ पे स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, patients आगे नहीं आते हैं ट्रीटमेंट के लिए. So that way we can say that this is the tip of the iceberg. I hope none of you have gone to that place. I have gone as a doctor, not anything else. So there are around 200 people who are lodged in Central Jail Srinagar who have drug addiction as a disorder, and few of them are HIV positive, as you said, and majority of them are hepatitis C positive. So one is the health aspect of it, कि HCV, HIV positive हो जाते हैं. Another is the legal aspect of it. बंद हो गया, NDPS लग गया. NDPS is an act for opioids. Once somebody is in possession of opioids more than the personal use, or for smuggling or for peddling, then he is caught. And NDPS में it's a harsh law, should be a harsh law in fact. So they are detained there, right? This is another scenario. So one is that our hospital, then is the controlled environment, we call it in the form of central. We see most of the times these boys and girls, there are few girls also. I don't mean there are a lot of girls, but there are few girls. There are many reasons for that. First of all, I feel personally in 20 years of my psychiatry practice, girls have a they say that girls are psychologically weak. This is a myth. If I feel there is somebody very strong in our family, it's the female. This is from my experience, I am telling you. Honestly telling you. If somebody is strong in the family and who withstands the tide, impulsivity ज़्यादा boys में होती है. Biologically also you can explain it, because boys have testosterone, which makes them impulsive. So वो impulse में कभी कभार ये नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, and to showcase their manhood, that we are men. I think, but they are belittling themselves, belittling Hazrat Adam, and belittling the teachings that our holy books across religions have told us. I don't think there is any religion in this world which would allow you to take a substance which will destroy yourself and your family. I don't think there is any religion in this. Cutting across religions, we will not talk about Islam only, Hinduism, whichever religion it is. Correct? So this is a religious perspective. Then economics, I told this boy had almost stolen everything. So beg, borrow or steal. What these boys do? पहले तो दोस्त से मांग लेते हैं, रिश्तेदार से मांग लेते हैं, हमसाया से मांग लेते हैं, फादर के फ्रेंड से मांग लेते हैं, बाहर जो किराना मर्चेंट होता है उसे उधारी ले देते हैं पापा के नाम पे. Then once it stops, then they steal. And once they steal something, they are caught in the legal tangle and they are caught by the police. Isn't it? So these are the repercussions of drugs of addiction. So how to counter it? I am telling you, you are from different families, from different areas. You are our messengers. It is not about Dr. Majid lecturing you, ये ऐसा है, वो आप सब इंटरनेट पे आप देख सकते हो. जैसे सर ने स्टडीज दिखा दी, मैंने बोला ऐसा हो रहा है. You will study everything in this. What is my aim here is that you disperse the knowledge that कि डॉक्टर साहब ने ऐसा बोल दिया कि एक इंडिविजुअल का ड्रग एडिक्शन करना सिर्फ एक इंडिविजुअल के तक महदूद नहीं रहता है. It crosses all boundaries. It is like, God forbid,
मेरे हमसाया का मकान, उसमें आग लगी हुई है, विल आई स्लीप चुप करके अपने मकान में, कोई दिक्कत नहीं है मेरे से यार, 50 फुट दूर है, कुछ नहीं होगा? नो, इट कैन, यू की चिंगारी उठेगी एंड इट कैन पुट योर हाउस एज वेल ऑन फायर। सो वी एज अ सोसाइटी, सारे हमसाए आएंगे, पानी लेके आएंगे, फायर सर्विस को फ़ोन करेंगे, गैस अंदर होंगे वो निकालेंगे। सो इट हैज़ टू बी कोलैबोरेटिव एफर्ट, देन ओनली इट विल वर्क। कि उस घर वालों को बोलेगा आप खुद यार अपनी, हम नींद करते हैं अपने घरों में, ऐसा नहीं। ड्रग एडिक्शन का सिनेरियो एक्जैक्टली वैसा है। इट्स अ हाउस ऑन फायर इन अ लोकल एरिया। सो एवरीबडी हैज टू कम फॉरवर्ड, बी इट द स्टूडेंट कम्युनिटी, गो बैक होम, सी। एट टाइम्स ऐसा होता है कि जैसे कौशल साहब ने बोला कि 2 साल के बाद पता चलता है, 3 हाफिज साहब शायद अभी बोल रहे थे वीडियो में कि 3 साल 4 साल के बाद पता चलता है फैमिली को कि हमारा बच्चा ड्रग एडिक्शन में है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डिनाइल में है, पीपल डोंट एक्सेप्ट इट कि हमारा बच्चा नहीं कर सकता। सर ये तो फरां स्कूल में पढ़ रहा है, बर्न हॉल में पढ़ रहा है, बिस्को में पढ़ रहा है, उधर पढ़ रहा है, इसको कैसे होगा? ये तो बड़े बड़े लोगों के बच्चों के साथ पढ़ता है। इट हैज़ नो बाउंड्रीज, इट हैज़ एब्सोल्युटली नो बाउंड्रीज। From lower socio-economic status to middle to higher social, we have seen boys and girls from all these classes. So don't be in this denial. Most of the times they are in denial, right? Few years back we had a very prominent bureaucrat who came over, डॉक्टर साहब आप क्यों बोल रहे हैं इनको UDS कराओ, ड्रग्स ऑफ एडिक्शन का टेस्ट कराओ, ऐसा क्या मेरे बच्चे में, मेरा बच्चा कैसे कर सकता है? तो आई एम टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट, मैंने कहा आप सर मुझे खदशा हो रहा, आप करा लीजिए। एंड माई खदशा टर्न आउट टू बी ए पॉजिटिव UDS टेस्ट ड्यूरिंग द ड्रग स्क्रीनिंग। So I told you it has nothing to do with your bureaucracy, with your financial status, with your family status. बेचारे को हो गया, it has happened, right? ये उसी तरह है, अगर सूट पीठ 6 सासा यू हैव, है ना, एप्पल, अगर एक पेटी में होते उसमें से एक खराब है, अगर नज़रअंदाज करा जाए बाकी हेल्दी एप्पल्स को बाहर नहीं, आप एग्रीकल्चर से हो, हॉर्टिकल्चर से हो, उनको नहीं निकाला जाए, all of them will get spoiled after 1 year. It's exactly right. Correct? So ये चीजें जाननी बहुत जरूरी हो, इंडिकेटर्स जानना बहुत जरूरी। इंडिकेटर्स doesn't mean diagnosis, but it can lead you to possibility है कि ऐसा बंदा शायद ड्रग्स ऑफ एडिक्शन यूज कर रहा है। So what are the indicators? एक तो ये बंदा जैसे इसका बिहेवियर था, इसका रवैया था, वो सडनली चेंज हो गया। घर वाले कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बड़ा पॉलिश बंदा था, इसको जान पहचान थी, बड़ा क्या होता है, टीचर क्या होता है, माँ बाप क्या होता है, बहन क्या होती है, सडनली ही हैज चेंज्ड। किसी का मानता नहीं है, गुस्सा करता है। एक तो गुस्सा इस एज में जायज है, देयर इज नो प्रॉब्लम, हार्मोन लेवल्स इज एट पीक, इट्स एक्सेप्टेड। But if there is a sudden change in behavior, and that too behavior of extreme nature, then particularly aggressive, disruptive behavior, that is there is some problem. It may not be drug addiction only, it may be other psychiatric disorders. Second important thing is that पहले डॉक्टर साहब जब स्कूल निकलता था, कॉलेज निकलता था, या अभी ड्यूटी लोग निकलते हैं, आजकल हमारे 30-35 साल 40 साल के भी लोग आते हैं, तो बड़ा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके कभी अच्छी तरह से लगा के निकलता था। अब ये ख्याल ही नहीं रखता अपने आप का वैसे जैसे पहले रखता। Then they will tell you that जो हमारे पास आता था, खाना खाता था हमारे साथ, शेयर करता था टेबल हमारे साथ, या दस्तरखान बैठ के, he tries to avoid. Why does he try to evade? Because इसको पता है कि अगर मैं दस्तरखान पे टेबल पे आऊँगा खाना खाने के लिए, लोगों को पता चलेगा मेरी आँखें लाल हैं, मेरे लिप्स पार्च्ड है, मुझे थरथराहट हो रही है खाना उठाने के वक्त, people will pick me up, right? So these indicators or school absentees, unfortunately जो रिवाज हो गया, मेरा एक तरह से डलगेट में भी है, whenever I come from my SKUAST Benna hospital to Delgate, I see बंद पे जो बच्चे होते हैं स्कूल से निकल के, हम भी 4 बजे निकलते हैं, so many boys and girls smoking cigarettes, and I just seen them smoking cigarettes, I don't know what else. But they say that cigarette smoking is पायदान for rest of the first पायदान for rest of the substances. ये दरवाजा है बाकी substances. So these indicators, if we keep in mind, I am sure
दैट अगर ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इन इंडिकेटर से हमें पता चलेगा कि शायद हमारा बंदा जो हमारा हमसाया है, हमारी फैमिली में, हमारे रिलेशन में है, शायद ये सब्सटेंस यूज कर रहा है। सो अगर इसको रिपोर्ट अर्लियर किया जाए, जैसे अभी इसमें भी वीडियो में भी बोल रहे, तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ उस बच्चे के लिए ही नहीं है, फैमिली के लिए नहीं है, बल्कि सारी हमारी सोसाइटी को बचाव के लिए, ताकि हम इस दलदल से कहीं ना कहीं कोशिश करें उस बच्चे को बाहर निकालने की, अपने आप को सेफ रखने की। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन फॉर योर हेल्थी लाइफस्टाइल, I will conclude in 5 minutes because I had been given 40 minutes and I'm also leaving. I have to attend some meeting at 1. कुछ चीज़ें मैं कहूँगा जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ जब भी कोई, चाहे मीडिया का प्रोग्राम हो या बच्चों का इंटरेक्शन हो। अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपने मी टाइम निकालना पड़ेगा। स्टडीज इज गुड, है ना? कितने कितने लोग मी टाइम निकालते हैं? एवरीबडी इज विद ग्रेड्स एंड ऑल, हाँ? कितने लोग ग्रेड्स के पीछे हैं? आप ग्रेड्स के पीछे हो? ओके, दैट्स नाइस, ग्रेड्स आर गुड, बट आई टेल देम नॉर्मली, जब मैं पेरेंट टीचर मीट में स्कूल जाता था, तो आई विल टेल द टीचर्स ऑफ माई बॉय एंड गर्ल, मेक देम गुड पीपल, लेट देम बी इन 80 percentile, 80 percentage I mean, not percentile, 80 percentage, 80% percentage, not necessarily 90, 95, 98, but make them good human beings. ऐसा ना हो खुदा न खास्ता इसका 95% हो और ये गलत सोहबत में चला जाए और गलत चीज़ें करे। Let him be at 90, 85 on. इसका मतलब ये कति नहीं आप घर जाके आप सो जाए और बोल दे कि सर ने बोल दिया 80% टेस्टिफाइड है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई एम टेलिंग यू, you prefer your health first, then is academics. For me it's like that. I'm a doctor, I always tell families, please prefer the health of the child first. अगर वो healthy है physically, mentally, then only he can become a good veterinarian, he will become a good agriculturalist, he will become a very good horticulture officer or a scientist, if he is mentally and physically healthy. If he is not, even if he is the topmost scientist of the world, and he is not mentally and physically, he will be a disaster for whole world. करेक्ट? सो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटली और फिजिकली बिल्कुल अच्छे हों, स्वस्थ हों, ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सके अपनी सोसाइटी। तो 4-5 चीज़ों का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको हमने ABCDEF में डिवाइड करा हुआ है, राइट? न्यूमोनिक जैसा होता है, आप कभी किसी का बायोकेमिस्ट्री का या किसी चीज़ का वो याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद रखें। तो ABCDEF of our lifestyle is very important. टाइम खत्म हो गया? Okay. So A is educate, sleep. That's the most important, right? We always say that we control our body and mind, right? But give time to your body and mind to control you as well. It cannot be one-sided traffic. समझ गया? So adequate sleep means normally 6 to 8 hours. 8 घंटे कितने लोग सोते हैं? अरे भाई बहुत सारे। 10 घंटे कितने लोग सोते हैं? 10 घंटे भी सोते हैं? So you are with me, don't worry. Right? I sleep around 8 to 9 hours. Not 10 hours, 8 to 9 hours. I have a good sleeper. Because once you give rest to your neurons, then only they can function nicely, right? But 8 hours is a minimum sleep one should go for. There are some sleep, जो less sleepers जिनको हम कहते हैं, right? We had Indira Gandhi, who used to sleep for 4-5 hours only. I have not seen her sleeping and waking up, but I have heard about it, right? We have Narendra Modi ji, current Prime Minister. He sleeps only for 4-5 hours. We have many people who sleep for 4-5 hours, but it depends upon the demand of the job. We are not prime ministers, we are not top bureaucrats that we just need to sleep for 4-5 hours. At your juncture, once you are going through the academics, minimum sleep is 6 to 8 hours. Remember it.
and maintain the sleep cycle. ऐसा ना हो कि एक दिन आप 10:30 सोएंगे, दूसरे दिन आप 12:30 सोएंगे. अगर आप 11 बजे सोते हैं, 6 बजे 7 बजे उठते हैं, तो वही स्लीप स्केड्यूल को मेंटेन करिए. राइट? ऐसा ना हो कि कभी कभार ऐसे भी बच्चे करते हैं सवेरे 4 बजे सोते हैं. वैसा स्केड्यूल को मेंटेन करें. That is adequate sleep. Then B is balanced diet. Hostelers कितने हैं? अरे इतने सारे, मुझे पता है balanced diet क्या मिलता है. Right? But we get dal chawal. Dal has lot of proteins. Correct? So you get good proteins. But what you should avoid, हमारे टाइम तो नहीं थे जब हम मेडिकल कॉलेज में थे. We have junk foods like Lays and all that stuff, chocolates and all. Especially girls, please. Avoid those things. Because we are doing a project, a national project at all India level with the reputed institute of India about the PCOD, polycystic ovarian disease, and unfortunately, J&K is among the top 5. That's the problem. क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, एक्सरसाइजेस बहुत कम है और फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया है. So try to avoid fried foods, chocolates, fatty foods, oily बिल्कुल कम कर दो. प्रोटीन जितना खाना खा लो, वेजिटेबल जितना लेना ले लो, फ्रूट्स जितना लेना ले लो. Right? So go for a balanced diet. Take excess of water, not in this weather. Otherwise you have to go out frequently out of this auditorium to go to washroom. Right? Then C is most important, which all of us, including me, are lacking. That is connecting to your family, friends, relations. Unfortunately, हम कह रहे हैं ना modern age में, modern हो गए. We have come from rural to the urban background, but we don't know what is happening in each other's house. There was a time I am from rural background. I come from Bandipur. So कभी कभार मेहमान आते थे हमारे घर में. अगर घर में कुछ non-veg नहीं होता था, because Kashmir has a tradition of serving non-veg to मेहमान. So हम सारे के घर जाते हैं, खूरमा शुआइगा या तशमा माज मशहूर या कोकर शुमा. आजकल के माम कौन जाएगा आज? Because that was sincerity, that was honesty. We are going from honesty towards the materialism. हमें अभी अशुभ तक दसाओं के साथ रिस्पॉन्स मानो आज से तमाशी यारस मसी मेरे नाव. It was all about love with each other. That is right. But you are there, we can connect still with each other. With our neighbors, with our relatives. Connect to each other. हमारा सबसे बड़ा फोन एक है. ये तो disadvantage के बहुत सारे लेकिन advantage भी है. Somebody is across seas, you can talk to him. How is he? Because lonely पड़ जाते हैं जो बाहर लोग होते हैं. Just talk to them. Then D, they say that we are living in Pilbara. Why do I say they say? Because now I don't feel we are living in Pilbara. To be very honest. है ना? हमारे morals, हमारे ethics, सब really bad state of affairs. Right? But still, devote yourself to the social causes. आपके क्लास में start charity from home. आपके क्लास में कोई बच्चा कमजोर है फाइनेंशियल, जिस्म नहीं उसको धक्का देंगे और गिरा देंगे, वैसे नहीं मैं कह रहा हूँ. फाइनेंशियली कमजोर है, ट्राई टू आइडेंटिफाई हिम एंड साइलेंटली हेल्प. दिस इज ए चैरिटी. ऊपर वाला उसमें खुश होगा, आपका दिल खुश होगा उसमें. सो डिवोट योर सेल्फ टू सोशल कॉजेज. डिवोट योर सम ऑफ योर टाइम टू द रिलीजियस एक्टिविटीज, विच एवर रिलीजन यू बिलोंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दोज हु हैव फेथ, देयर आर सम पीपल हु डोंट हैव फेथ. दोज हु हैव फेथ. And another D is stay away from drugs of addiction, which we are discussing today. Right? Then E is exercise. आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा कैंपस है. In fact, once I drove in and I thought that I'll go around, and I had around 5 minutes with your leisure. I told you I'll reach at 11 because I had kept 5-7 minutes to go around the campus. I don't come frequently this place. You have a beautiful campus. In between you have, आपके साथ में कोई चल रहा है, डिस्कस करिए चलते चलते कोई भी टॉपिक, लेकिन चलते रहिए. Don't be in the canteen staying in at one place and having tea and samosa and every time. Just take your cup of tea outside and move around. That's more important. So exercise, not necessarily a gym. Everybody won't have a gym at home or have facilities to access the gym. But you have a big campus, huge campus, and a lovely campus. कोई यहाँ आएगा फिर यहाँ वॉक नहीं करेगा, ये तो मेरे ख्याल में
enough is find help. Help is not necessary with Dr. Majid. सब Dr. Majid अपने आप की तरफ ड्राइव कर रहे हैं लोगों को, नहीं. First help is your trusted relative, your colleague, your friend. मेरे को ये issues हो रहे हैं, particularly those who are elderly, because they have gone through these experiences. जो आपका यहाँ PhD scholar है या आपके higher semesters में है या even teachers. We have medical college में हम plan करें कि हम mentors करें every batch के लिए, so that if they have issues other than academics, for example मैं psychiatry में हूँ, they will tell me sir हम psychiatry pursue करना चाहते हैं. I will tell them why do you want to pursue. ऐसा नहीं कि माधुरी को देख के आप भी करोगे, ऐसा नहीं है. Don't be like it. but कश्मीर में होता था ना, STD लगा दिए तो सारों ने STD लगा दिए, right? अब जो भी यहाँ पे फास्ट फूड लगा रहे हैं, so you have to channelize your aims and ambitions as per your potential with the supervision of senior. That's very, very important. That's why we have teachers here who can guide you which one is suited for you. So take always expert advice from the teachers, right? So अगर teachers से, अपने family members से, अपने दोस्तों से, अपने elders से आपको उतना फायदा नहीं मिल रहा है, it is always once you have signs of stress. Signs of stress अगर हैं, मन अच्छा नहीं है, पढ़ाई में उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं रहता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, बिहेवियर में चेंज लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, कुटंसी हो रही है. Yesterday the Hindu newspaper आपने सुना होगा, the Hindu. So the correspondent of that was calling me, sir, J&K is on the top as far as self-harming behavior is concerned. Self-harming means suicide, intentional suicide or non-suicidal behavior. या तो अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. These things people only do in certain conditions with certain logics. I will conclude with this because this is happening in our boys and girls. One is that कि कभी कभार internal distress होता है, चाहे childhood में sexual abuse हुआ हो, physical abuse हुआ हो, या खुदा न खास्ता कोई conflict का situation हो, या relationship issues हो बच्चे में, या academic pressures हो, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और they want to gain sympathy out of that or present themselves because they cannot present the internal distress or conflict. They are not okay with presenting it. They present it like this. Second important thing, media से काउंसलर सलाम बहन साहब, तो इनसे मैं कहूँगा कि there are many media channels which portray self-harm as a very good tool. आप देखते हैं movies में, they show you blade cut लगा के लड़की से झगड़ा हो गया या लड़की को लड़के से झगड़ा हो गया, they glamorize it. But this is not our society. We are a different society. We cannot copy paste what is happening in West. Europe में कैसा हो रहा है? I have been to Europe, I have been to UK, I have been to USA. 17 years, 16 years, 14 years old girls becoming pregnant. It is their way of life. It is not our way of life. We are a different society. We are an orthodox, traditional, different society. We have faith as our core belief. That is why over the period of 30 years, the turmoil has been there. People would come, यहाँ पे earthquake आ गया, यहाँ पे बंद हो गए, and people will have lot of psychiatric disorders. We always would feel that Kashmiri society is resilient enough. We have backup of our religions, whichever religion, Sikhism, Islam, Hinduism, whichever you belong to. It's a big coping. So please use these things, the family structure of ours, the religion of ours, the social networking of ours. These are the big coping mechanisms that can help us come out of these stressful situations. If they are not helping, then we are there to help you. Please open up and come to us, and जो भी है, आप में से नहीं, आपके घर वालों में से, आपके दोस्तों में, we are there to help you. We as a society need to address that because we are all have some sort of relationships in our lives, be it friends or other kinds. So I think we need to address this. We need not be ashamed of it. It is something that should be addressed. And being a girl, I think every female should be taught about it and should have the knowledge. This was the aim of my talk today, that people come up with things. But you are absolutely right that way. I was talking on a lighter note, but you made it a very serious
issue. This is what I am telling. So my lighter note saying that please, whenever a guy approaches you, be very careful about substances and abuse. The society will blame you, but you have been proved correct that he was using substances. You have saved yourself, your family, and your society from getting associated with such a person. That is why I wish we had girls of such courage to talk about this issue. And let me tell you, boys, your beta Abba, this is the answer to you. She had the courage to say no. So my talk did not glamorize people to go into drugs, but stay away from these people who are using drugs. To ask sir, like campaigns, तो people like small scale पे लोग आते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, like thousands of people come here, but movies and web series are like, you know, at the doorstep. And you know, the movie directors and the movie makers, they romanticize drugs and they make it look so cool. नीचे लिखा होता है injurious to health, लेकिन nobody looks at that. So what are your views about that? कि censor board lets it, you know, to be displayed to the huge public, and they are influenced by it. Is it? How much it was glamorized? कैसे वो फैन के पास चढ़ा, कैसे उसके, that was really absolutely absurd. It is all personal life. Whatever had happened to him, it was relationship issue, or it was he induced death to him, whatever the reason. Even after death, unfortunately, with all respect to media people, we should not go into the personal areas of our people. Correct? So glamorize ये बदकिस्मती है. एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अगर मूवीज में हार्ट अटैक होता है, आप बैठे बेटा, मूवीज में हार्ट अटैक होता है तो उसको वो डीसी शॉक लगाते हैं, सब बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं, उसको डीसी शॉक लगाते हैं, राइट? इट इज पोर्ट्रेट एज गुड. आप तेरे नाम देख लो, हाउ मेनी हैव वॉच्ड तेरे नाम? हाउ इज ईसीटी पोर्ट्रेट एज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी? Why same is not applied to DC shock? वो भी वही करंट है, ये भी वही करंट है, उसको क्यों अलग तरीके से परसीव किया जाता? It is all perception created by this web series and glamorization by media. That is the unfortunate part. That is what I am saying. We have to probably work at many levels to counter what is myth and what is reality. The myth is that we keep on searching what psychiatrist gives, but you have never searched what your Oppo is getting from the endocrinologist or the physician. Because the tag, again, as this girl said, tag is there. As this girl so nicely put it, the tag is there, unfortunately. The tag, for example, diabetes क्यों होता है? I will explain it in a common language. Diabetes क्यों होता है? इंसुलिन की कमी की वजह से होता है. पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है उसकी, और दवाई क्यों देते हैं आप? इंसुलिन का रिप्लेसमेंट दे देते हैं. उस दवाई में इंसुलिन का रिप्लेसमेंट होता है ताकि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल पे आ जाए. अगर हम डायबिटीज के लिए दवाई ना दें तो क्या होएगा? पेशेंट विल डाई इमीडिएटली. और इफ इट इज नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड, ही मे हैव किडनी फेलियर, ही मे हैव लॉस ऑफ विजन, ही मे हैव न्यूरोपैथी, द 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन. सेम इज ट्रू ऑफ साइकाइट्री. जो भी दवाइयां हम देते हैं वो डिसऑर्डर के लिए देते हैं, और जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनका एक रीजन है क्यों होते हैं. जैसे पैनक्रियास से इंसुलिन का निकलना, कम निकलना डायबिटीज कहलाता है. इसी तरह दिमाग से डोपामीन, सेरोटोनिन, अगर आपने पढ़ा होगा आपने इसमें 12th में, उसकी कमी की वजह से डिप्रेशन होता है, या डोपामीन इंक्रीज हो गया, मैनिया हो जाता है. ड्रग्स ऑफ एडिक्शन लेते हैं क्योंकि डोपामीन कम होता है, और ड्रग्स ऑफ एडिक्शन उसको ज्यादा कर देते हैं, डोपामीन को थ्रिल मिलता है, उसकी वजह से होता है. This is all wrong. We need to understand, do we want to live a life which is full of misery, full of depression, full of psychosis, and die a very painful life, or take medicines which will make our life, our family's life very smooth? The option lies with you. You can Google these days. I am telling you, I am challenging you. Paracetamol कितने लोग लिए हैं अभी तक इस हॉल में? Simple paracetamol कितने लोग लिए? Almost everyone. Have you ever Googled side effects of paracetamol? Google side, हाँ? आप Google करो, आपको 20 साइड इफेक्ट मिलेंगे.
Does anybody look towards that? Because there is stigma towards psychiatry and psychiatric medicine. That is why we are discussing that. That is why we are searching that. Look for antidepressants on the one side and look for paracetamol on the other side. I am absolutely sure you have more side effects with paracetamol than psychiatric medicines. That's my answer. Family, for example, a family. So like they are giving money to their children and they are not even asking on how much he is spending, where he is spending. So do you think that those parents should be blamed for their students getting loan? Father या हमारे बाकी लोग हमें पेंट नया लाके दे देंगे, but they will tell you please improve your percentage, improve your studies, take this पेंट, इसमें थोड़ा सा सुराख हुआ है, इसको कुछ लगाएंगे, आप यही पेंट लेके जाओ. The era has changed. Right now we have 3 trousers for our kids who are going to school, 5 shirts. Is it? But it's good. I don't mean that वैसा ही करो जैसे होता था शस्पर किंतु जैसा पैंटस तरीके. I think most of us might have seen that arena, isn't it? I had at least. I proudly see that. That is why I'm a doctor. I'm not a drug तो दूसरा आपका था regarding yes नहीं एक तो देखा देखिए obviously there is another problem what I have seen. The career. There are many families देखा देखी को देख के कि उसका बेटा जो है वो MBBS करने गया, हमारा बेटा भी जाना चाहिए. And there was one psychiatrist who is in Institute of Mental Health, Dhaka, as dean. He met me in Kolkata last year only. He said, डॉक्टर साहब आप मुझे बता दें, हमें इंडिया से MBBS करने के लिए बच्चे आते हैं, 90% तो कश्मीर से होते हैं, ये क्या दिक्कत है? I said, ये आपके समझ से बाहर है, मैं आपको कभी आराम से बता दूँ. It is that same देखा देखी. That's the important part. They see Ali Jan Sahab in every child of theirs, which is not true. We need to understand the potential of the child where he will fit. And ask him. My son told me categorically, Papa, he got qualified for both NEET and he said, I am good in mathematics, please allow me to pursue the dream of engineering. I said, okay. Because I first qualified for that time Regional Engineering College, Srinagar. And my family forcibly put me in Medical College, Srinagar. Right? So, but I'm doing Alhamdulillah quite good, so I want to let him live his dream and my dream also of being a good engineer. Right? So, more important है, let you live your own dreams. हाँ, कभी कभार ऐसा ड्रीम कहो कि हम ड्रग पेडलर बनेंगे, वो तो ड्रीम नहीं है ना. That is not a dream. So dream has to be justified. It has to be a responsible future. Thank you very much. That you have communicated this story in a nice and beautiful fashion. And at the end, I would just simply say we need to understand A, B, C, D, E, and F, what Dr. Majid Saab has mentioned, and we need to ensure that prevention is better than cure. We need to prevent ourselves from this menace of drugs. And do remember, pleasure becomes habit and habit becomes addiction. So can we pledge today that we'll be ensuring that we'll keep our eyes open? Is it a promise from everyone over here? Yes, sir. No, I did not hear anything. Yes, sir. Once more. Yes, sir. Thanks a lot. Now I would request Professor Rehana ma'am, all student welfare officers and Dr. Majid Saab to come on dais so that we can felicitate Dr. Majid Saab for his wonderful lecture. Thank you. Agriculture, student welfare officer, Dr. C.V. Lohani, faculty of horticulture, and Dr. Udasir Kerwali, faculty of fisheries. From faculty of fisheries, from faculty of forestry, from veterinary sciences, from faculty of horticulture, participants. We have 3 rounds of the quiz, and at the end, if we reach a tie, then we will be having a tie breaking round also. The judge of the event or the quiz will be Professor Dr. Rehana. We come from
statement है कि the judgment जो होगी judge की that be final. Okay, we'll be having 3 rounds and a tie-breaking round at the end. If we reach a tie, so we are ready to start. Starting from the right, jury members. Starting from the right, team A will be from Faculty of Agriculture, team B will be from Faculty of Fisheries, team C will be from Faculty of Forestry, team D will be from Veterinary Sciences, and team E will be from Faculty of Horticulture. Participating members, please listen to me. First question will be displayed for team A, starting from Faculty of Agriculture. There will be no pass on of questions. The second question will go to team B, which is from Faculty of Fisheries, and in similar manner, third question for team C, fourth question for team D. Are we ready? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन। The date on which the NDPS Act came into effect. C part. It's for team A. Team A. So it's C, 14th November 1985. लॉक किया जाए। आप इतने एक्साइटेड हो अभी आंसर नहीं पता है। Should we lock it? The second question is for team B. Let's have it on the screen. The NDPS Act 1985 is applicable to all citizens of India within India, all citizens of India outside India, all persons on ships, on aircraft registered in India or abroad. A. All citizens of India within India. Let's log it. क्या लगता है सही होगा? The chapter under NDPS Act 1985 describes punishment for offence is option A, part 3, option B, part 4, option C, part 5, or option D, part 6. B. Option B, part 4. Option B. Bombay, people, Bombay. D, part 4. Part 4. Are you sure? They're just rambling. Let's lock it. लॉक किया जाए। सही जवाब। Question number 4. So that's the right answer from the group C. Question is on the screen. Next question for TV is Section 9A of the NDPS Act relates to A. Power to central government to permit, control and regulate. Option B is power to control and regulate controlled substance. Option C is power to add or omit from the list of psychotropic substance. Option D, all of them. Time starts now. It's for E group. Do we have an answer? Time is run out. B. Option B? B. Option B. Option B. B. I said B. Yeah, B. B. Option B. Okay, they are going for option B. Anybody from the audience now you can try it. We have locked B. Okay.
Let us check if 14 B is the right answer. Girls played well. This marks the end of the first round. We will be moving to the next. Yeah, we will request the respected judges to announce the scores of the teams. We'll be starting number 1, Faculty of Agriculture with 4 points. Faculty of Forestry with 4 points. And Faculty of Horticulture with 4 points. And Veterinary Sciences is on hold, it will be checked at the end. For the second round, the question on the screen for the group A is. Question number 6. No female shall be searched by except a female. It is stipulated under which section? Option A, section 50, option B, section 42, option C, section 43, or option D, section 44. For group A. Option C. Option C. Anyone from audience? We sure? Option C. Lock कर दें. Okay, lock option C. Let us check. And the right answer is option A, section 50. Moving on to the next question. The question for the team B is punishment for criminal conspiracy under NDPS Act 1985 comes under section. A option is section 28, B section 29, C section 30 and D section 31. It's for group B. Option B. Option B. Okay, locking option B. Audience में कोई option B is locked. Try कीजिए, क्या लगता है? B? Okay, let us check. Option B is the right answer. It's the right answer. A huge round of applause. I will request all students to clap for them as well. Okay, the next question for team C. Punishment in relation to manufactured drug comes under dash section of the NDPS Act 1985. Option A, section 20, option B, section 21, option C, section 22, or option D, all of the above. Team C. Option A. Option A, section 20. Option A लॉक कर दिया. कोई और ट्राई करेगा ऑप्शन ए के सिवा ऑडियंस में से? Don't ask audience. Don't ask audience. Okay. Option B. Because when you ask audience, then the question can be changed. So once you lock it, it is final. Option B is the correct answer. Now for team B, we are having the question. Death punishment under NDPS Act is provided in A section 30, B section 31, C section 31 again, 31A sorry, and D section 38. It's for team B, Faculty of Veterinary Science. Option C. Option C. Option C. Okay, option C. Let us check. Wow. The next question for team E. Section 25 of the NDPS Act deals with dash A. Punishment for embezzlement of opinion by cultivators. Option B. Punishment for allowing premises to be used for commission of an offence. Option C. Punishment for contravention in relation to psychotropic substances. Option D. Punishment for contravention in relation to poppy straw. Option D. Option D.
Option D? Okay, lock option D. Option D, it's wrong answer. Option B is the right answer. Right answer is punishment for allowing premises to be used for communication of an offense. This marks the end of the round 2, and we shall again request the jury to please announce the results. Faculty of Agriculture is with 4 points, and Faculty of Fisheries, Forestry with 4, Faculty of Forestry with 4, FBSC with 4, and FOH with 4, all with 4. Please round of applause, please. Now the round 3 begins, and the question for Group A. The question on your screen is: which section of the NDPS Act provides for duty of landholder to give information of illegal cultivation? A. Section 46, B. Section 47, C. Section 45, D. Section 50. It's 14A. Shall we repeat the question? Which section of the NDPS Act provides for duty of landholder to give information of illegal cultivation? A. Section 46, B. Section 47, C. Section 45, D. Section 50. C, section 45. Let's mark the C. Section 45. Okay, let's check. It's the wrong answer. The right answer is A. Section 46. The next question for Team B. Please maintain silence, please. I request all students to maintain discipline in the auditorium, please. I repeat, the question for Team B is: what is the first conviction for illegal import or export in NDPS? Option A: imprisonment up to 10 years or fine of 1 lakh. Option B: imprisonment up to 3 years or fine of 1 lakh. Option C: imprisonment up to 15 years or fine of 2 lakh. Option D: imprisonment up to 3 years or fine of 1 lakh. This is the question for Team B. Time starts now. Option B. Option B. Imprisonment up to 3 years or fine of 1 lakh. Let's lock it. There is some glitch because option B and D are Okay. There is some problem with the question. I think 2 options are same, right? We will skip the question. We can skip. We have. No. You just go for the correct answer. Okay. What is the answer from repeat? Option B. Option B. Let's log. Okay, let's check option B. It's still the wrong answer. So it is done. Both of them were incorrect. Now the question for Group C is on the screen. Section 12 of the NDPS Act 1985 deals with A. Restrictions or external dealing in NDPS. B. Prohibition of certain operation. C. Punishment for contravention in relation to revered opinion. And option D is punishment for certain acts by a licensed or his servants. Team C, do we have an answer? Hurry up. Time is running out. C. Option C. C. Okay, logging C. It's wrong answer. The right answer is restrictions or external dealing in NDPS. It was for Group C. Next question for Team B is: minimum percentage of morphine in any pharmaceutical preparation must be option A, not more than 0.2%, option B, not more than 0.5%, option C, not more than 1%, or option D, not more than 1.5%. Option B. Option B, not more than B. 0.5%. B, 0.5%. Okay, logging option B, 5%, 0.5. Wrong answer.
Now, question for Group E on the screen is SMAC is a drug obtained from A. Latex of Papavia somniferum, leaves of Cannabis sativa, flowers of Datura, fruits of Erythrosylum coca. I guess it's from NCERT. It's option A. Option A. Okay, locking option A. Yes, the Right right answer. answer. The right answer is latex of Papavia somniferum. One question is left for veterinary sciences. Okay. One question for the group जिनका question रह गया था उनके लिए question है. ठीक है, group B, you have another chance. Okay, the question is on the screen. Question for the group B on the screen is cannabinoids is obtained from dash of dash inflorescence Cannabis sativa fruits Papavia somniferum latex Cannabis sativa inflorescence Papavia somniferum. It's for group B. Option A. Option A, inflorescence of Cannabis sativa. Let's lock it. It's the right answer. Now I request the jury to please confirm the scores, and in case it's a tie, then we will be having some more questions. Give us a moment to decide, please. Are you excited for the results? We have two faculties leading and they have tie. That's Faculty of Horticulture have 8 points and Veterinary also has 8 points. So there's a tie between Veterinary and Faculty of Horticulture. And the others have 4 points. Faculty of Agriculture had 4. So, as of now, we have horticulture and veterinary. The others are eliminated. 3 teams have been eliminated, and we are just left with the 2 teams. That's Faculty of Horticulture and Veterinary Science. There will be an eliminating round for these 2, and there will be a final decider. It's unfortunate, we may request the eliminated teams to get off the fence. Sorry. Now it's the mega contest between the horticulture and veterinary science. Let me tell you, we will be having 4 questions, 2 for each faculty. 2 each. See, we have 2 teams now. अब हमारे पास 2 teams हैं. 4 questions total put किए जाएंगे. First, अगर 4 में से ही 2 options किसी के सही होते हैं तो obviously will be the winner. और अगर ऐसा नहीं होता, we reach again a tie, then we will be having another round जिसमें एक question put किया जाएगा. Okay? Let us check the field. अभी क्या होता है इन 4 questions पे. The first question for the team horticulture is naloxone is used as an antidote given intravenously for the overdose of option A heroin, option B opium, option C IBM, option D morphine. Option A heroin. Okay, we are locking option A, heroin. Actual answer is opium. Unfortunately. Now the question for Faculty of Veterinary Science is overindulgence in food and then vomiting is the nerve disorder called schizophrenia, dementia, anorexia nervosa, bulimia. Bulimia. The answer is D, bulimia. Okay, Option D, bulimia. Please lock it. Option D, we are locking it. Okay, let us check. It's the right answer. I request the audience to please maintain the decorum. Agriculture is opioids are drugs that bind to specific opioids receptors present in our option A central nervous system, option B
urinogenital system. Option C, gastrointestinal tract. Option D, both 1 and 3. It's option D, both 1 and 3. Okay. Option D. 1 and 3. It's the right answer. I guess this question is too from NCRT. Now let me tell you, it's getting tough. We are left with just one question. If veterinary sciences answers this question, they will be winners. And in case they fail to answer the question, there will be again a tie, and we shall be having another question session. Audience, please maintain silence. Okay, the next question. Question. Veterinary sciences. Silence, please. Okay, the question for veterinary sciences is: some athletes use and consume cocaine because it acts as a option A, stimulant, option B, hallucinogen, option C, sedative, option D, anabolic compound. Option A, stimulant. Option A, stimulant. Can we have Okay. the answer, please? Locking option A, stimulant. Is that Judges are requested to announce the results, please. Hello. So the most exciting moment is to announce the winner or the runner-up first. Okay. The runner-up is Faculty of Horticulture. So I congratulate the Faculty of Veterinary Sciences. So FPSC has 14 points, followed by Faculty of Horticulture at 12. Congratulations. It was an amazing performance. Ladies and gentlemen, a huge loud applause for everyone. All our winners. We are left with mementos for the runner-up as well as the winning team. So be a moment with us. Let's first have a group photograph of the winners, runners. Well, I request everybody meanwhile to subscribe to RNA News channel on For our runners-up, Division Faculty of channel. Horticulture. Now it is the turn for the winners of today's event. Faculty of Veterinary Sciences. I could not hear the loud applause. This side, agriculture. A loud applause. It was an amazing performance from all the participants. We are glad to witness that SKUAST-K is packed with gems, backed by our respective faculties. In the dance between darkness and light, choose recovery. For every step is a no. But at the end of the day, you have to remember the pledge. And what is that pledge? Prevention is better than cure. As we wrap Stay away from. As we wrap up today's session of 8th Guides, appreciate the presence, time and efforts of our administration, participants, guests and of course audience. Thanks for bearing with us so far. That's all from today. अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया. अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया. अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी. हमने तो दिया जला के सरेआम रख दिया. Everybody, every student is requested to write down at least 2-3 pages regarding this program. Okay, that is a reflection. So today's this week's program is over.
Anybody who wants to go to their residence, they are allowed, but you have to be in time on Monday. Okay? Thank you very much. हमारे यहाँ सबसे खास ये था कि चीफ गेस्ट आए थे, उनका नाम डॉक्टर माजिद था. He was from SKIMS, Bemina, and it was really glad. We were really glad to have him here, and we feel really honored. हमने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ उन्होंने भी सीखा. It's very give and take relation, and हमें ये चीज समझ आई कि ड्रग से क्यों दूर रहना चाहिए. ये सिर्फ एक इंसान नहीं, ये पूरी फैमिली, इसमें एक पूरा माशरा जिसको हम बोलते हैं, एक पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है. And it's very important to be away from drugs. ऐसा तो कुछ नहीं है कि gender specific message है. It's very gender neutral message. It's like equal for the men, equal for the women. कि ये कोई ऐसा कुछ gender को problem नहीं करता है. It's like it creates a problem for human. It creates a very inhumane problem. So it's very necessary for everybody, from every gender, from every age, to be away from it. It's very necessary. इज्जत के लिए ये है कि इस्लाम में भी बोला गया है कि गुनाह करने वाला खराब नहीं है, गुनाह खराब. तो उस हिसाब से अगर कोई खुद को सुधारने का मौका किसी को मिल रहा है, अगर वो खुद को सुधार रहे हैं, इस्लाम में भी ये है कि तौबा करो और फिर वो रिपीट ना करो तो आपको माफी दी जाती है, आपको उसका हिसाब नहीं होगा. तो हम तो वी आर जस्ट मेयर ह्यूमन. अगर इस पूरी कायनात का अल्लाह साहब जो है वो हमें माफ कर सकते हैं, वी आर जस्ट ह्यूमन. वी हैव टू फॉरगिव देम, वी हैव टू गिव देम अ चांस टू लिव. इट्स लाइक द लाइफ गोज ऑन लाइक दैट. एंड अगर उनके लिए इज्जत आपको नहीं दे सकते, आप उनको नहीं कर सकते, देन यू डोंट हैव द ह्यूमन. आप सब किसी को ये भी नहीं बोल सकते कि आप अपना बिहेवियर ठीक करो, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जब उसको मौका ही नहीं दे रहे हो वो इज्जत वाली सोसाइटी में रहने का, डोंट आस्क देम टू लीव लाइक अ ड्रग बेड, बिकॉज आप उनको स्पेस ही नहीं दोगे रहने की, तो फायदा क्या. बिल्कुल होनी चाहिए. पहला तो यूथ के लिए होनी चाहिए, बिकॉज वी आर द फ्यूचर ऑफ लाइक एवरीथिंग. वी आर द फ्यूचर लाइक ऑफ द जनरेशंस कमिंग ऑन. सो इट इज very necessary for us to be aware of everything what is happening in the society. So yeah, it's very important to have campaigns like that. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बात तो हमारे साथ अभी बराह रास्त जुड़ी हैं अनीसा, जो कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखती हैं, SKUAST की एक तालिब इल्म है. चलिए उनसे बराह रास्त बात करते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से. आपका खैर मकदम हमारी चैनल में. जी बताइए थोड़ा. जैसे कि आपने देखा आज हमारे 2023 जो प्रोग्राम है हमने यहाँ पे SKUAST-K में किया है, उसका 4th डे था और 4th डे था ड्रग अब्यूज़ के बारे में, ड्रग एडिक्शन के बारे में. इसमें हमने बहुत सारे मेहमान को बुलाया था, हमारे वाइस चांसलर से बहुत सारे मेहमान को बुलाया था, जैसे कि डॉक्टर माजिद सर यहाँ पे आए थे. उन्होंने हमारी काउंसलिंग की, लगभग 1-2 घंटे तक हमारी काउंसलिंग की और हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए उस काउंसलिंग से. हम शुक्रगुजार करना चाहेंगे BC सर से, WS सर से, BSW से कि आपने यहाँ पे ये बहुत अच्छा इवेंट हमारे लिए क्रिएट किया. हम इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मोटिवेट हुए और ऐसे इवेंट आप हमेशा करते रहिए. हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज जो माइंड होता है जब हम इसकी काउंसलिंग करते हैं तो माइंड मोटिवेट हो सकता है किसी भी चीज़ से वापस आने के लिए. जब कोई इंसान जो होता है, जब वो कोई गलती करता है, फिर उसके पेरेंट्स आते हैं, वो उनको समझाते हैं, तो वो मोटिवेट हो जाता है. ऐसे ही जब भी प्रोग्राम्स हम यहाँ पे करते हैं, तब कोई हमारा आता है, हमारा काउंसलर आता है, वो हमारी काउंसलिंग करता है यहाँ पे, तो हम उससे मोटिवेट होते हैं. एग्जैक्टली हमारी यूथ को आज यही पर्सनैलिटीज चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, मतलब इन बुरी चीज़ों से दूर रहने के लिए. मतलब मैं बहुत खुश हुई हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट किया. वाइस चांसलर से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा इवेंट इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया. थैंक यू सो मच. The whole family, these are the most sensitive parts of society. So all the girls who are watching out there, अपनी इज्जत के साथ साथ आप लोग अपनी सोसाइटी की इज्जत, अपनी फैमिली की इज्जत को रिप्रेजेंट करते हो. So whenever you are out, you are walking, etc. So try to be convenient within your path and try to be a kind of a girl जो बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई हो, and just do not fall in these kind of menace, because eventually ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करती है. और इसकी वजह से अगर एक लड़की ऐसी चीज़ पे मुब्तला होती है, the whole womanhood gets into a very disaster menace.
immense pleasure कि RNA media group came here to SKUAST Kashmir and we are really thankful to all of you. सबसे पहली बात ये है कि आप लोग यहाँ आए था टाइम वाइम निकाल के हम लोग को यहाँ पे एक बहुत जो इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है जो मेन सोसाइटी में है कि ड्रग्स हर एक की एक हिसाब से एक नीड बन गई है, हम ऐसा सोचते हैं लेकिन हम लोग रिलाई करते हैं ड्रग्स पे, हम कंप्लीट उसी चीज़ पे रह रहे हैं. इट्स नॉट एक्चुअली वी शुड नॉट रिलाई ऑन दीज थिंग्स. हमें ऐसा होना चाहिए कि वी शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ड्रग्स ही सब कुछ नहीं है. स्पेशली बॉयज़ एंड गर्ल्स वो इतना एंगेज हो रही है, अच्छी बात नहीं है. आप लोगों ने हमें डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर एवरीबडी whosoever was here, very informative and we had a mental health awareness through the doctors from SKIMS and they were so nice and so informative to us. सबसे पहले हमारी सोसाइटी में बहुत स्ट्रेस है आजकल, तो वो स्ट्रेस जो उसकी वजह से ड्रग्स ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि वो हमें प्लेजर काइंड ऑफ थिंग होता है. ड्रग्स सर्व्स एज अ मेडिसिन टू द पेशेंट्स, तो उनको लगता है कि यही सारी लाइफ है, ऐसा ही हम अगर लेंगे ड्रग्स तो हम ठीक रहेंगे, बट नहीं, वो अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं. दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स डेथ. तो वो चीज़ है, स्ट्रेस मेन थिंग है. दूसरी बात ये है कि हम लोगों को बहुत कंपटीशन आ गया है सोसाइटीज़ में. स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात करें तो हेयर एवरीबडी कम्पीट्स विद वन अनदर, और ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे को देखा देखी है यहाँ पर, अगर कोई चीज़ करे तो दूसरे को भी करनी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. उनके खिलाफ कोई अलग नज़र नहीं होनी चाहिए. अगर आप अपनी सोसाइटी में किसी को देख रहे हो कि वो ड्रग्स कर रहा है तो आप उसको हेल्प करो, आप उसको काउंसिल करो, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ जो उसको हेल्प कर सकते हैं वापस लाइफ की तरफ आने से. ऐसा नहीं कि हम उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट करें कि वो डेथ की तरफ चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. First of all, I want to thank the RNA news media, and before going to exactly on your question, I would like to give you a brief about whatever we are doing in these days. We are organizing 21 days foundation program for freshers, which is under National Education Policy 2022, and today is the 4th day of that program. We have organized different programs like we have a free medical camp in which we have invited various doctors from the valleys for free consultation, and today we have organized this program in collaboration with RNA News, and we have two sessions today. And first session we have a very useful and important talk from the Dr. Abdul Majid, who is a professor and HOD of Psychiatry Division of SKIMS, and he delivered a very good lecture on the drug abuse, which is the most serious scenario of today's society. So, if a person like Dr. Majid tells about the youngsters the bad effect of drugs, it becomes more effective. So I think this program is going to be very useful for our kids or our children, and we know that the success and failure are the two parts of a coin. So I want to give a message to all the youngsters that don't get depressed. If you feel or get any depression or you are not getting success, whatever you want to achieve in your coming days, but strive hard until you succeed, because we all know the famous saying of some sire that गिरते हैं से सवारी मैदाने जंग में, वो तब क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. So failure and success are two parts of the life. Do whatever you want to do, but with a good vision, and at most the important aspects of for the young one is that do something which make your parents proud, and as well as you feel better in your lifestyle. So first of all, I would like on behalf of Department of Students Welfare as well as from my university to RNA News for organizing such a vibrant program for our students, and it will definitely be very useful for our kids. Thank you. और हमारे साथ बराह रास्त अभी जुड़ी हैं डीन एग्रीकल्चर साइंसेज की डॉक्टर रेहाना हबीबी, तो उनसे बात करते हैं बराह रास्त. तो मैम क्या बताएंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये फाउंडेशन प्रोग्राम हमारे फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया है अंडर एनी. तो ये 1 मंथ का प्रोग्राम है और इसमें डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए.
एज वेल एज उनके एंटरटेनमेंट के लिए और उनका शो कॉज ऑफ टैलेंट होता है। और आज RNA ग्रुप से जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल इशू उठाया गया था वो था ड्रग अब्यूज में, और उन्होंने डॉक्टर मार्जिन को बुलाया हुआ था जिन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की कि ड्रग अब्यूज क्या होता है और इससे हम कैसे प्रिवेंट करें। और ये कोई ऐसा हीरोइज्म का एक्ट नहीं है कि हम एक दूसरे के देखा देखी में ड्रग्स का इस्तेमाल करें। और उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बताए उनको, जैसे कि एडिक्वेट स्लीप लें, उसके बाद बैलेंस डाइट लें और कनेक्ट करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिकली, और उसके बाद वो डिवोशन भी करें, मतलब जो भी उनका रिलीजन है उसमें डिवोट करें और एक्सरसाइज करें। और फिर अगर वो मतलब जा रहे हैं टूवर्ड्स ड्रग तो वो फ्रेंडशिप्स में हेल्प करें। ये मुझे लगता है कि बिल्कुल सही टाइम है इन स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, क्योंकि अभी 12th तक ये बच्चे बहुत पढ़ रहे होते हैं और बिल्कुल स्ट्रेस होता है। और उसके बाद अभी हमारे यूनिवर्सिटी में आए हैं, चाहे वेटरनरी में, चाहे एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर में, तो इससे इनका ये हो जाता है कि अब ये आएंगे और कहीं उनको कोई डिसअपॉइंट हुआ होता है कि उसका कोई और एम्बिशन होता है या किसी को ज़्यादा स्ट्रेस लग जाता है किसी नई जगह में, और हो सकता है वो टुवर्ड्स ड्रग अब्यूज जाए। और दिस इज़ द राइट टाइम कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये पूरा जब स्लाइड सिखाई गई कि कितना बैड इफेक्ट है, क्या होता है, वैसी स्टोरी सुनाई गई जो रियल लाइफ में हो चुका है, और वो कन्विंस हो गए कि हाँ ये मतलब टुवर्ड्स ड्रग अब्यूज ये ठीक नहीं है। एंड वॉलेंटियर कि अगर कहीं हम देखेंगे ऐसा कि कहीं पे ड्रग अब्यूज में है, कोई ड्रग एडिक्ट बच्चा है, हम कंपैशनेट रहेंगे, हम उससे हेल्प करेंगे और उसको हेल्प करेंगे रिहैब में जाने के लिए या उसको घर से बाहर निकालने में। तो आई थिंक कि ये जो RNA ग्रुप का आज ये प्रोग्राम हुआ हमारे साथ कोलैबोरेट SKUAST के साथ इनका है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और ये टू द पॉइंट था, और जो उन्होंने एक्सपर्ट्स लाए थे वो भी बहुत अच्छे थे, और जो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन रहा वो भी बहुत अच्छा रहा। आई थिंक इट्स ए लॉन्ग मैसेज विल गो डाउन। ये हॉस्टल्स, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा हॉस्टलियर्स हैं, हॉस्टल्स हैं हमारे हर कॉलेज कैंपस में हॉस्टल्स हैं, और अगर हमारी ऐसे वॉलंटियर्स इसमें आ जाएं जो ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट फाइट करें, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी सक्सेस है।